Good afternoon and a warm welcome to all of you. I thank you all to for you to join this today's webinar on topic emerging career opportunities and skills needed. In 2022, this is the third in series of several student enrichment programs we have been conducting over the last few years on diverse topics to equip our student communities, not only the management students, but also graduate students on different skills and knowledge, where we call our industry and academic experts to share their views with the students. So as you already know, I am Professor Abhishek. I will be moderating this session, and maybe after initial comments, we will have question and answer sessions, and then we'll throw the floor open for questions from the audience. I take this opportunity to thank our chairman, senior management, our dean cum senior director, Dr. Sujata ma'am, and all the faculty members whose untiring efforts has actually made BCCM today top management institute in Odisha as well as East. And our panel members would actually, and the guests would be happy to know that BCCM has been in fact ranked among top management colleges in Odisha in 2021 based on several parameters. It was established in 2006 and it's run under the aegis of Bharatiya Vidya Bhavan, an institution of national eminence that was founded in year 1938 in Mumbai, a philanthropic initiative to promote education, art and culture. And at present, it's having almost around 119 centers and 367 institutions in India and abroad, offering courses on various disciplines, including arts, science, commerce, engineering, technology, and management. At BCCM, we are offering 2 years full-time management course that's approved by AICT with specializations in marketing, finance, human resources, and healthcare. Courses, since it's a PGDM program, courses are independently designed jointly by industry and academic experts to meet the contemporary needs of the business. And in fact, we have several collaborations with private and public sector industries, business houses, and entrepreneurial ventures, which exposes students to deeper understanding of working in these organizations. BCCM, since it's been for almost 15 years or so now, so we have a strong network of alumni who are serving in senior positions and who come to address our students and give perspectives as to what corporate is all about. And we focus on overall development, continuous learning through classroom-based and as well as hands-on experience. Students are learning through experience as well, apart from the regular curriculum. We also, students and faculty members also are encouraged to participate in different state-level forums and interact with senior distinguished members, like students participate in Think Tank Odisha, seminars conducted by professional organizations like Indian Society for Training and Development, NHRD, etc. And coming over to our distinguished guests for today, we have two distinguished people with rich experience of academics who would be talking on this topic and would be sharing their views. First of all, we have Dr. Krupasindhu Pradhan sir. Dr. Krupasindhu Pradhan sir is currently the head of PG Department of Analytical and Applied Economics at N.Autonomous College of Science and Technology, Adaspur, Cuttack, and is also heading IQAC. He is an MA from Ravenshaw University and a PhD from Viswabharati Santiniketan. Dr. Krupasindhu Pradhan has authored 5 books, many journals in national and international conference. A warm welcome to you, sir. And next on our panel, we have Dr. Vidula Ramalakshmi ma'am. Dr. Vedula Ramalakshmi ma'am is currently the Associate Professor, Department of Hindi at Kamla Nehru Women's College, Bhubaneswar, and has 29 plus years of experience in teaching Hindi language and literature at all levels. Apart from teaching, she has a lot of versatile talent. She has been associated with Doordarshan and has hosted several programs to promote Odia culture and literature. She has also been the anchor and has been giving live commentary on Doordarshan during the famous Jagannath Rath Yatra since 2013, and has also gave commentary during the auspicious Nav Kalevar Rath Yatra. She has anchored
for the International Sand Art Festival live since 2013. Dr. Vedula Ramalakshmi has trained over 15,000 plus participants from across different states on areas like human relations, public speaking, communication skills, leadership and team building, time management and change management. She has conducted training programs for organizations like IIT Kharagpur, RBI, SBI, Vedanta, MCL, etc. Dr. Vedula ma'am is also the coordinator for IQAC. Welcome ma'am to you as well. So coming back to this topic, obviously we are seeing a lot of changes. This pandemic has forced a lot of changes, but otherwise also there has been massive digitalization. Businesses are being built on technology as the backbone, right? We have aggregator services, we have e-commerce, and logistics is also growing as a field. And all these are spawning new job opportunities in different fields, including management. Today, we will discuss about different career opportunities which are available and what skills are required to be successful for these jobs. So now I would like to call upon Dr. Krupasindhu sir to open his thoughts, share his thoughts on this. So over to you now. Thank you, Abhishek sir. Thank you, Abhishek sir. Really, it is a proud privilege on my part. I am thankful to Sujata madam and Vidya, Bharatiya Vidya Bhubaneswar, Bharatiya Vidya for giving, for holding this webinar on the emerging trends and career opportunities. So, with a warm welcome to all the members present here and on the online or who are watching this. I am Dr. Krupasindhu Pradhan, head of the Department of Economics from N.Autonomous College of Science and Technology, Adaspur. So, what I want to share with this is what are the skills and what type of job we are really wanting nowadays for a graduate students. Normally, when a student is getting his degree, UG degree, after getting his UG degree, we are supposed to run into the job market, and we are running from here and there. So what we are seeing from the last 1 decade or more, job opportunity has widened its field and the base is much more widened. So normally with the people, the graduates who have passed recently or 1 or 2 year backs, they are expecting a lot of things from the market, and some are able to achieve their goal and some are not achieving, they're not possible to get there. So commonly the job which we expect or our youth must expect, they expect a civil, they want to be a civil servant, they want to be a teachers, they want to be a lecturers, they want to be a chartered accountant, or all these things. But besides this, lot of job opportunities are available nowadays in our markets. For example, suppose stock market professionals is a good jobs which is now available, that anyone can enter into that market and he or she can earn a very good source of income. Similarly, we can be the travel consultant, we can be the interior designers, professional YouTuber, we can be a makeup artist, we can be a dance instructor, we can be a real estate agent, we can be a personal trainer, we can be acupuncturist, we can be elevator mechanics, meteorologist, nurses, midwife, civil servant, diploma in computer applications, postgraduate diploma in hotel management, management app development, lot of things are moving nowadays here and there. But the problem is where our youth are unable to be employed and where they are not getting a suitable jobs as per their wish list.
sincerely speaking, we are lacking the skill, and the skills are of different types. What I will share to my view is transferable skill. Transferable skill. Having a competitive job skill is an important part of developing one's career. There are many qualities that are universally desired by employers regardless of their field. Especially if you are unsure about your career plan you would like to pursue, it is important to develop skill that we can transfer from one industry to another, and that allow us to explore our job options freely while still creating a strong resume and performing well at work. So today I will share some of the top transferable job skill that apply to any industry or experience level to help one to know what priorities one have to give in search of a job or developing a career. Then next question is, what is a transferable skill? Transferable skill are various abilities, knowledge, and behavior that can apply to any type of work. Most soft skills are transferable because they are related to general work, general habit, our attitude towards co-workers, our attitude towards clients. So this transferable skill, such as teamwork, strategic thinking, are highly flexible that can benefit a person to get a job regardless of his environment. Since no two jobs are the same, employees seek out the candidates with transferable skill because they show that the applicant is flexible and adaptable. Then next question arises, why transferable work, why transferable skill are important? Transferable skill or transferable work are important because they help the people to advance in their career or change job without having to learn a new system for interacting with others and completing their work. Having a flexible work skill can make it easier to switch professionals or gain experience in a new work environment. They also help employers to keep a high standard of behavior at their company by selecting employees that have an understanding of the workable or workplace behavior. Sir, I think your voice, you're muted, sir. 12 important skill that that can help us. So even if we are planning to stay at one company or one industry for a long time, having a flexible or transferable job skill can still support success in our career. Since some companies may value certain skill more than others, research potential employers to learn which skill they should focus on developing. Here we are enlisting some important transferable skill which can help a young graduate to choose a good career. The first skill is decision making. Decision making play a vital role in choosing a career option. The ability to make good decision and commit to them is highly sought after skill in industry. If a person of the present generation is unable to take a concrete and solid decision, then his future job career can be a question mark.
So good decision making requires you to able to analyze the situations and predict the possible outcomes of the situations. If we are unable to predict the possible outcomes, then it is clear that there is something wrong in the process of decision making. That means, or we may call it, we are unable to give a good judgment. Good judgment. So decision making play an important role while we are choosing a job. Then second transferable skill is multitasking. Nowadays, everybody, whether it is a public sector, private sectors, or a company, everybody is interested for multitasking activity. Many jobs require employees to multitask and manage multiple assignments. Nowadays, our youth mass are so self-centered, they are unable to share their responsibility and tasks. They are pinpointed assignment. They like to work in a pinpointed assignment. So multitasking also shows the ability to focus on one task without neglecting your other duties. This skill supports your ability to take on new project and help others when they are struggling with their workload. It is natural age, and even if in our family also, when we are shouldering the responsibility of a lot of assignment, similarly also in the work side also, we should be able to take multitask assignment. Multitask assignment can help you to prove your strength and in which way you are different from your rest co-workers. Then third skill or third transferable skill is creative problem solving. Problem is a part of life, and creative problem solving involves thinking of unconventional solution to a complex issue. So conventional solutions we can get it from everywhere, but it's because you are a person of a company and you have to face at any times any problems. So demonstrating a creative problem solving skill will definitely help you to be better than the rest of your co-workers or co-colleagues. So creative problem solving is considered as one of the good skill by which we can prove our strength, or we can show that we are the best, and we can handle the situation in a better manner. Then fourth part is collaboration. Collaboration and teamwork are the skill that can not only improve the quality of your work, but the general productivity of your team. Many employers seek out candidates who work well with others and are willing to make compromises to produce quality work with their team. So the attitude of collaborative attitudes is an essential skill by which we can prove that we are better than the rest of the team. Then most important communication skill is communication skill. This communication, it may be verbal communication, it may be non-verbal communications. Communications is a medium, or it is a means by which we can prove our strength. Good communication can help you to become successful in any field by setting clear expectations with your managers and co-workers. Many companies use different methods to communicate depending on the type of work, whether their employees work in a central office or in a remote place of a village. In order to apply your communication skill to a new work environment, you should ask others about how others usually communicate in the workplace. So communication happens to be one of the important transferable skill. Then the next transferable skill,
Professionalisms. Professionalisms refers to a high standard of behavior expected of people who are serious about their job. It includes timeliness, politeness, and organization, among many other habits and attitudes. Being professional requires you to be self-motivated and hold yourself accountable for your actions without needing oversight from a manager. Professionalism can be a good indicator that an employee will perform well at their job. So, it is a necessary skill for anyone looking to succeed in their career, regardless of their field of work. Then, next transferable skill is integrity. Integrity and trustworthiness is an important quality in your career because you will use it in every day, regardless of what type of work you do. Establishing yourself as a person who is honest and supportive to others can help you to work better and can develop your network and find a good career opportunities. While building a good reputation within your field, it is very much helpful that without integrity, it is not possible on our part to succeed. Having strong morals can help you to learn responsibility at work and build trust among your workers. Then, next transferable skill is management. Management skill include coordinating the efforts of your team, delegating tasks, and making plans to carry out goals. Strong management often influences the success of an organization, so it is one of the key skills employers look for. Your ability to manage people and project can be applied to any field, especially if you are interested in a leadership position. Then initiative. Initiative is another transferable skill. Having initiative means that you are able to motivate yourself to pursue new tasks and produce a high quality of work. Taking initiative can help you to get promotions, advance your career, demonstrate your commitment to your job. So people who are highly motivated and show initiative are often successful regardless of their industry they choose to work in. Empathy. Empathy is another type of transferable skill. Having empathy and emotional intelligence is an important skill for any job. So you're muted again. Okay. With other people. People who practice empathy at work actively listen to the needs and the ideas of their colleagues. The skill is useful because it promotes teamwork and creates a company culture that is open to growth and new ideas. Then leadership skill can help you in all respects of your career. They enable you to motivate others to complete the tasks or to work in a better way or to share their goals and improve your morale. Leadership skill exists at all levels, from entry level to the chief executive levels. So if we are unable to be good leaders, then it will be really impossible on our part to pursue our feelings, pursue our thought to our organization. Then last one, transferable skill is teamwork. Teamwork means working well with other people, working with the clients,
working with the colleagues, working with the managers, working with all stakeholders of the company. We are working, taking everybody in the workplace, working with others is required in most industry and most positions. So to be a good career opportunist, I think we must have these transferable skill so that we can be well marketable in this common market. Thank you very much. Thank you, sir, for your insights on different transferable skills, which are important. And now moving on, I would request Dr. Vedula ma'am to share her views about what are emerging trends and the skills sets which is required. Over to you, ma'am. Thank you, Abhishek sir, Sujata ma'am, and BCCA Bhubaneswar for this opportunity. And I would like to ask the students, you can put your comment in the chat box. Are you comfortable with Hindi? If I talk in Hindi, is it okay with you? Hindi and English? आजकल की भाषा English अगर मैं कहूँ, आप लोग comfortable हैं? Okay, yeah, that's wonderful. That's wonderful. Thank you so very much, friends. Oh wow, ये बहुत अच्छी बात है. क्योंकि मैं हमेशा ये महसूस करती हूँ कि जिस भाषा में हम कंफर्टेबल हैं और जिस भाषा में हम कनेक्ट कर सकते हैं, उस भाषा में अगर मैं बोलूं तो शायद मैं आप तक ज्यादा अच्छे तरीके से पहुंच पाऊंगी. इसीलिए मैं हिंदी और इंग्लिश मिलाकर जो आजकल की आपकी भाषा है इंग्लिश मैं बोलना चाहूंगी. मैं कुछ शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे एक रियल लाइफ इंसिडेंट, यानी तो मैं कहूं कि मेरे लाइफ का एक कैरेक्टर, उससे मैं आपको मिलवाना चाहूंगी. थैंक यू अभिषेक सर. सो जो छोटी छोटी नर्सरीज है ना, वहां पे एक बंदा है और बड़ा ही प्यारा सा बंदा है. उम्र उसकी मेरे ख्याल से 23-24 इयर्स की होगी और बड़े प्यार से वो पेश आता है. और एक बार जब मैंने उससे कुछ प्लांट्स खरीदे तो उसका बिहेवियर, उसका कम्युनिकेशन इतना सुंदर था, मुझे लगा कि मैं हमेशा उसी के पास से लूं. और उससे बातें करते करते मुझे पता चला कि उसने एक बहुत ही रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, भुवनेश्वर के एक रेपुटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, EEE में बी किया है. तो मैंने उससे पूछा कि तुम बी करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद नर्सरी क्यों चला रहे हो? तो उसने बताया क्या बोला, उसने बोला कि वो बड़ी श्रद्धा से मुझे माँ बुलाता है. उसने मुझे बोला कि माँ बोधे आपण मो छोटो दुकानटा को देखिकी आपण कहउचंती कि इंजीनियरिंग कले मल्टीनेशनल कंपनीज रे रहिले बहुत पैसा मु रोजगार करि पारि थांती, किंतु लेट मी टेल यू माँ, I earn more than my friends who are in multinational companies, right? And I was just continuously thinking about that. मैं बार बार उसके बारे में सोचती रहती हूँ और मुझे हमेशा लगता है कि उस बंदे की जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो अलग है और उस बंदे ने जो कोर्स किया है वो बिल्कुल अलग. अक्सर ऐसा ही होता है. मैनेजमेंट कॉलेजेस में आप जाकर देखिए, जितने मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी कोर्स पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और भी अलग अलग जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल ग्रेजुएशंस, ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस है वो पढ़ने वाले बच्चे तक ये नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअली उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है और वो क्या काम करना चाहते हैं. आइदर उनको ये बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े बड़े प्रोग्राम्स उनको अट्रैक्ट करते हैं कि MBA कर लिया या इंजीनियरिंग कर लिया या कुछ और कर लिया, एंड ये चीजें उनको बहुत आगे तक लेके जाएंगी. Without understanding their core competencies, they just get into these courses just like that, maybe because of peer pressure, maybe because of pressure of the parents या expectations from the parents, यानी तो फिर गलत गाइडेंस की वजह से वो इन कोर्सेस में चले जाते. और उसके बाद होता क्या है? उसके बाद जो है परेशानी इस बात की होती है कि कोर्स तो वो कंप्लीट कर नहीं पाते या किसी तरह कंप्लीट कर लिया, उसके बाद कई बार मैंने देखा है कि वे लोग इन सबसे, अब जो कोर्स पढ़ाई की है ना उससे एकदम अलग हटके दूसरी ही नौकरियां वो कर रहे होते हैं, दूसरी ही जगह में वो पहुंच गए होते हैं.
माय डियर यंग फ्रेंड्स, मेरे एज के जो भी लोग होंगे यहाँ पर, वे सभी इस बात से, इट्स 29 years आई एम वर्किंग एज लेक्चरर इन हिंदी, आई टीच हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड मेरे साथ के जितने भी लोग हैं वो एग्री करेंगे कि हमारे ऑप्शंस बहुत कम हुआ करते थे. We rarely used to have any options. इंजीनियरिंग, मेडिसिन, टीचिंग, बैंकिंग, इन चीजों को छोड़कर हमारे पास ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे. लेकिन जैसे कि कृपा सिंधु सर ने कहा कि नाउ यू हैव n नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड n नंबर ऑफ एवेन्यूज ओपन बिफोर यू. तो जो भी आपके कोर कॉम्पिटेंसी है, आप अपने उस कोर कॉम्पिटेंसी को पकड़कर अपना पूरा का पूरा करियर बना सकते हो. So first we need to understand what's the difference between passion, hobby and career. तो उसके हिसाब से अगर आप अपना सही रास्ता चुनोगे तो फिर आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, स्काई इज द लिमिट. इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक बात सुनी थी कि स्काई शुड नॉट बी द लिमिट. क्यों? क्योंकि लिमिट कहते ही कहीं ना कहीं एक अंत आ जाता है. अरे आसमान से ऊपर जाके भी देखें एक बार कि वहां की दुनिया क्या है और वहां जाकर क्या मिलता है. दिस शुड बी द एटीट्यूड, राइट? सो सबसे पहले हम लोगों को बिना कुछ जाने पहचाने भेड़ चाल चलने के बजाय, भेड़ चाल इन द सेंस सब जिधर जा रहे हैं उधर चले जाए. MBAs आर गुड, MBA में चले जाए. इंजीनियरिंग आर गुड, इंजीनियरिंग में चले जाए. ये सोचने के पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज माय कोर कॉम्पिटेंसी, कि मैं कौन सा काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. यदि आपको अपने आप की समझ नहीं है तो आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके मेंटर्स हैं जो आपको इस मामले में हेल्प कर सकते हैं. I just want to give you a wonderful acronym, that's success, and let's understand कि success का acronym मेरी समझ से क्या आता है. You need to have a wonderful plan. Start with a plan. आपके पास एक प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप क्या काम कर रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, उसके लिए प्लान जरूरी है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर समझ लीजिए आज आपको दिल्ली जाना है या आज आपको लद्दाख जाना है, समझ लीजिए आपको लद्दाख जाना है. लद्दाख बहुत सुंदर जगह है और वहां का एक सुंदर सा गांव है तुर्तुक, जहां पे जाने की मेरी हमेशा ही बहुत इच्छा रही है. तो वहां पे जाना अगर मैं चाहूं तो मुझे बहुत सारी चीजों का रिसर्च करना पड़ेगा, मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे रिजर्वेशंस करवाने पड़ेंगे, वहां पे होटल बुक करना पड़ेगा, वहां की सारी चीजों को देखना पड़ेगा. ये समय डेफिनेटली लद्दाख के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वहां पर बर्फबारी होती होगी और टेम्परेचर माइनस में होगा. तो उसके लिए सही समय क्या है, सही समय पर मतलब किस समय पे मुझे जाना चाहिए, ये सारी प्लानिंग के साथ अगर मैं अपनी ट्रैवल शुरू करती हूँ तो फिर लक्ष्य स्थल पर पहुंचने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता. तो ये तो सिर्फ नॉर्मल सी ट्रैवलिंग की मैं बात कर रही थी, जहां आप अपने 100 years के लाइफ की बात सोच रहे हैं, अपने टारगेट्स बना रहे हैं, अपने सपनों को सच करने की बात कर रहे हैं. सो माय डियर यंग फ्रेंड्स, यू नीड टू डेफिनेटली हैव अ वंडरफुल प्लान. एंड बिफोर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर एबिलिटीज. आप कौन सा काम बहुत अच्छा करना चाहते हो. मैं साइंस में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी एंड मेरे पिताजी हमेशा से, मेरे डैडी हमेशा से चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, और मैंने डॉक्टर बनने से इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी जो कोर कॉम्पिटेंसी है वो है, मेरा माइंड बहुत लॉजिकल है, मैं बोलना बहुत पसंद करती हूँ, लिटरेचर में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, लैंग्वेज को पकड़कर उसके ऊपर महारत हासिल करना, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना मुझे बहुत पसंद है, और इन सबका डॉक्टरी में कोई स्थान नहीं. I said tata bye bye to medical profession and I joined traditional BA with Hindi honors at Visakhapatnam, Andhra Pradesh, जो कि एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप था. लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं था, ना मेरे डैडी को और ना ही परिवार में किसी को और ना ही किसी दोस्त को. बिल्कुल वो पसंद नहीं कर रहे थे कि मैंने हिंदी को चुना है. बट देन मैं अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जानती थी कि मैं एक डॉक्टर नहीं बन सकती. मैं सपनों में जीने वाली हूँ, अपने शर्तों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीने वाली हूँ. हमेशा ऑन टोज खड़े रहकर ड्यूटी करना शायद मेरे बस की बात नहीं है, और इसीलिए मैंने हिंदी लिटरेचर को चुना. एंड आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी एज अ हिंदी टीचर.
और एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर जहां पे मुझे बोलने का मौका मिलता है, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे बोलना पसंद है, जहां जहां बोलना होता है वहां पे रामलक्ष्मी होती है, एंड आई एम एंजॉइंग माई लाइफ एंड आई एम एंजॉइंग माई करियर। सो अंडरस्टैंड व्हाट आर योर कोर कॉम्पिटेंसीज, एंड एक बार समझ में आने के बाद किसी भी फील्ड में जाने के पहले गैदर दैट इंफॉर्मेशन कि आपको उस फील्ड में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एंड उसके लिए किस तरह से आप उस फील्ड में जाएंगे, कब कहां किस तरह से उसके ऊंचाइयों पर पहुंच पाएंगे, किस तरह से उस फील्ड को अपने काबू में ले सकते हैं, किस तरह से उसको अपना करियर बना सकते हैं। लेट इट बी एनी करियर, लेट इट बी एनी करियर, इट रियली डजंट मैटर, कोई भी काम आप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको तभी संभव होगी आपके लिए व्हेन यू विल कम्युनिकेट विद द पीपल इन पर्टिकुलर फील्ड। अगर आप मुझसे आकर पूछेंगे कि मैम प्लीज गाइड अस कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैसे करनी है या बीकॉम करने के बाद हमें कहां जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मैं सही इंसान नहीं हूं, या नहीं तो फिर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करेंगे तो फिर मैं सही इंसान नहीं हूं। आपको अपने अभिषेक सर से या सुजाता मैम से या किसी और फैकल्टी से बात करनी चाहिए जो कि इस फील्ड में उन्होंने महारत हासिल की हुई है। सो communicate with the people who are in the field and they can guide you properly, और वो आपको बता पाएंगे कि आपका जाना कहीं पर भी किसी भी आपने जो जगह चुनी है या जो लक्ष्य बनाया है वहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड उसके बाद इवॉल्व अ कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब मुझे ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगेगा, उसके बाद मुझे किस तरह से आगे की पढ़ाई में जाना पड़ेगा, मुझे एंट्रेंसेस देने पड़ेंगे, ऑन द मेरिट बेसिस जाना पड़ेगा, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको द बेस्ट करिकुलम आपको दे सकते हैं और आपको निखार सकते हैं, आपको सिजल कर सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर मतलब प्रोफेशनल के रूप में आपका करियर बना सकते हैं। ये आपको पूरी की पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी और पूरा का पूरा रिसर्च करने के बाद आपको एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाना जरूरी है। और उसके बाद आप अपनी ये सारी चीजें जो आपने शेयर की हैं अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से शेयर कीजिए। अक्सर बच्चियां मेरे पास आती है, मेरे स्टूडेंट से मेरे पास आती हैं और वो कहती हैं मैडम हम ये करना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स पसंद नहीं कर रहे हैं, मैडम हम पेरेंट्स चाहते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो हमसे एक्सपेक्टेशन लिए बैठे हैं जबकि मेरा उस काम करने में कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है, मैम आप हमें बताएं हम क्या करें। परेशानी ये है कि जब आप जाकर जिद पर बैठ जाते हो कि मुझे XYZ काम ही करना है, लेकिन पेरेंट्स जानते हैं कि उनका अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, पेरेंट्स को मनाना है, उनको कन्विंस करना है, तो यू नीड टू बी कन्विंस्ड फर्स्ट। और उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और सारी इंफॉर्मेशन के साथ जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे उनको समझाएंगे कि दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन, ये यहां पर ये कोर्सेस है, मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं। इफ यू आर अ गर्ल, give assurance of your safety and security at that particular place कि वहां पे किस तरह के हॉस्टल्स हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बीच में कॉल किया था और वो गुजरात यूनिवर्सिटी में, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी में पीजी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मैडम हमें जाना है, मैडम घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, मैडम प्लीज मैडम उनको समझाइए, मैडम प्लीज मैडम प्लीज मैडम। मैंने कहा मुझे जरा समय दो। गुजरात यूनिवर्सिटी में जो मेरे परिचित है प्रोफेसर, उनसे मैंने बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर आपके हॉस्टल की क्या परिस्थिति है। उन्होंने कहा वी डोंट हैव अ लेडीज हॉस्टल, वी डोंट हैव अ लेडीज हॉस्टल, जो भी गर्ल स्टूडेंट्स आती है वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी रह ले। तब फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को कॉल किया और मैंने बोला दिस इज द सिचुएशन, आर यू रेडी विथ इट। तो बोले मैडम पेरेंट्स तो छोड़ेंगे नहीं। मैं बोली यस ऑफ कोर्स, तुमको उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में नेट वगैरह की कोचिंग भी नहीं होती, वहां पे प्रॉपर स्टाफ नहीं है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है। इतनी सारी चीजों के साथ उस यूनिवर्सिटी के लिए जिद करना या वहां पे जाके पढ़ने की सोचना एक बहुत बड़ी मूर्खता होती। तो ये सारी चीजें आप जब अपने पेरेंट्स से शेयर करेंगे, है ना, उनको हमेशा याद रखिए आपकी सक्सेस चाहिए। अगर आप उन्हें कन्विंस कर पाए सारी इंफॉर्मेशन के साथ अपने टीचर्स को, अपने मेंटर्स को, तो वो आपका साथ एकदम देंगे। एंड उसके बाद शार्पन ऑल द नेसेसरी स्किल्स। जो भी काम आप चुन रहे हैं उस काम को करने के लिए जो भी नेसेसरी स्किल्स है उनको आप शार्पन कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बोलना था तो फिर भाषा के ऊपर मैंने महारत हासिल की,
बोलने के तरीके पर मैंने महारत हासिल की, डिफरेंट कोर्सेज किए मैंने जहां पर पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में मैं अपने आप को आगे ला सकूं। एग्जैक्टली द सेम वे आप लोगों को भी जिस किसी फील्ड में भी जा रहे हैं उस फील्ड से संबंधित जो नेसेसरी स्किल्स है, जैसे कि कृपा सिंधु सर ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ढेर सारे स्किल्स की बात की, उन सभी स्किल्स को शार्पन कीजिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपने ड्रीम को विजुअलाइज कीजिए। आप देखिए कि आप ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वहां पर हैं, अपने आप को उस पोजीशन में देखिए। और इन सबसे बड़ी बात माय डियर यंग फ्रेंड्स, बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ एंड द होल वर्ल्ड बिलीव्स इन यू, इट रियली डजंट मैटर। But then if the whole world doesn't believe in you and you believe in yourself, it matters a lot. It matters a lot. एक छोटी सी कहानी 2 या 3 मिनट की सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। एक गांव में 2 बच्चे रहते थे, एक 5 साल का और एक 10 साल का। ये दोनों बच्चे एक दिन खेलते जोश जोश में गांव से बाहर निकल के चले। अब जब शाम होने लगी तब उनको होश आया कि अरे हम तो गांव से बहुत दूर निकल आ गए हैं, और वो एक जंगल में पहुंच चुके थे। वहां से उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, और खेलते खेलते अचानक रास्ता ढूंढते ढूंढते परेशान हालत में क्या हुआ, ये जो 10 साल का बच्चा है वो एक सूखे कुएं में गिर गया। अब सूखे कुएं से उसको निकाले कैसे? दोनों बच्चों ने पूरी जान लगाकर जोर जोर से वो चीखे चिल्लाए, हेल्प हेल्प हेल्प, कोई तो हमें बचा लो, कि आसपास कोई भी होगा तो आके उन्हें बचा लेगा। लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। तो बड़े बच्चे ने कहा, एक काम कर, आसपास में जो बेल पड़ी हुई है, जो क्रीपर्स पड़ी हुई हैं, लंबी वाली एक क्रीपर को ला और नीचे डाल, मैं पकड़ूंगा तो ऊपर खींच लेना। उसने नीचे डाला और खींच लिया। 5 साल के बच्चे ने अपनी उम्र से दुगने और वजन में बड़े बच्चे को खींच के बाहर निकाल। अब ये दोनों बच्चे निकले और किसी तरह रास्ता ढूंढकर गांव पहुंचे। गांव वाले परेशान थे और उन्होंने पूछा कि अरे भाई कहां थे तुम इतने देर? तो उन्होंने अपनी सारी विजय यात्रा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ। सब लोग हंसने लगे। वो 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है? इम्पॉसिबल है ना। उन्होंने कहा कि तुम बेवकूफ बना रहे हो। बच्चों ने लाख कोशिश की ये समझाने की, नहीं हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। वहां पे जो गांव का एक बुजुर्ग इंसान था, उसने कहा कि नहीं बच्चे सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जंगल में उस 5 साल के बच्चे को कोई ये बताने वाला नहीं था कि प्लीज डोंट डू, यू कांट डू इट, तुम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं था। और उस 10 साल के बच्चे को कोई ये बोलने वाला नहीं था कि अरे वो तेरे से बहुत छोटा है, वो तुझे खींच नहीं पाएगा, तेरे को गिरा देगा, तो उसके ऊपर भरोसा मत कर। दोनों ने एक दूसरे की एबिलिटीज के ऊपर भरोसा किया एंड दे वर सक्सेसफुल। सो बिलीव इन योरसेल्फ। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कहीं है तो वो आप में है, ये ना भूलें। और अपनी ताकत पर भरोसा करके आप दुनिया के किसी भी ऊंचे शिखर के ऊपर पहुंच सकते हैं। एज आई सेड, आसमान को भी छेद कर ऊपर निकल सकते हैं। सो आज के इस पैंडेमिक की स्थिति में सबसे ज्यादा अगर जरूरी कोई चीज है तो अपने आप के ऊपर बिलीव करना, अपने ऊपर भरोसा रखना और अपने द्वारा सोची गई चीज प्लान पर सही तरीके से एक्शन लेना, और तब जाके आप अपने हर एक लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने सारे सपनों को पूरा कीजिए। एंड जब आपके सपने पूरे हो जाए तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। God bless you all the very best. Thank you so very much. Thank you, ma'am, for your motivating speech, and I hope people would definitely follow. Now, actually, we would move on to the second round, which is question and answer sessions. I would be putting a couple of questions, maybe, and audience also would be asking. So it's for Dr. Krupasindhu Pradhan, sir. Like you spoke about lot of different transferable skills. And yes, these are very important and it can be applied in any job situation or any industry, etc. But the point is, how can students work towards actually developing these kinds of skills, right? So what are different ways and what kind of exposure they should be having to give them a feel about this and also go towards developing these skills? Okay, Dr. Pradhan sir, if you are there and you are able to hear me.
Okay, in that case, I'll move on to you, Dr. Vidula ma'am. Yes, I mean, in fact, what you said, the core competencies which we may have and the skills we acquire may be completely different. But it's a challenge because our education system does not provide for people getting exposed to different core competencies or different activities which they may be liking. It's till 12th, it's science or maybe different subjects. Then you get into graduation and then into certain post-graduation courses. Yeah, unlike in some other countries where actually students from the beginning are exposed to different creative activities or things like that, which helps them understand their core competency and pick up that field. So how do you suggest? I mean, what you talked about mentors and getting a lot of information, but first is actually how does that come out of you? That this is what is my core competency. Abhishek sir, we definitely need to have that awareness. Time is changing and we just can't, हम लकीर के फकीर बने नहीं रह सकते. जो हम हमेशा से करते आए हैं वही बेस्ट है, हम ये नहीं सोच सकते. This is the time has arrived. We need to think out of the box. हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. जैसे कि पेंडेमिक की सिचुएशन में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हमेशा कहते थे कि आमको ये कंप्यूटर किसी आसे नहीं, आमे से ऑनलाइन किसी जानूनु, आमे ये सब बुझुनु, एटा सब आमको दरकार नहीं, आमे पाठ जमती पढ़े आसथिलु सेमती पढ़े माने पढ़ेबु. ये बात जो कहते थे ना, वो सारे टीचर्स ने आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू की और एफिशिएंटली ऑनलाइन क्लासेस कर. तो we need to necessarily change that mindset, sir, and that you and I can do, because बच्चों में अभी भी वो समझ नहीं है. तो हमको, जैसे कि we all are parents, we are mentors, we are teachers, तो हमको अपनी चारों ओर वो माहौल बनाना होगा कि बच्चा जो भी करना चाहे, स्टूडेंट जो भी करना चाहे, वो बिल्कुल भी सही रास्ते पर होगा. हमें उनको गाइड करना है, नंबर 1. नंबर 2, अगर बच्चे का कोर कॉम्पिटेंसी हम पेरेंट्स को और हम टीचर्स को समझ में आ जाता है सर, हम समझ जाते हैं. बट द थिंग इज, हम भी जो है एक क्लास में 50 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीशन और उसी की तरफ अगर हम रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा. बट देन हम समझ सकते हैं. एंड हमें हर बच्चे को इस बात के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि सबसे पहले तुम समझो कि तुम करना क्या चाहते हो. और जब बच्चा अपनी बात बताए तो वो हो सकता है कि वो अनकन्वेंशनल सा मतलब फील्ड हो जो कि आज तक किसी ने किया ना हो और एक अलग सा फील्ड हो, तो उसको डिस्करेज करने के बजाय हमें उनको पूरा का पूरा कोर्स ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा, उनके लिए पूरी प्लानिंग करके देनी पड़ेगी, उनके लिए हर रास्ता निकाल कर देना पड़ेगा. लेट मी टेल यू सर, हम सभी, आप और मैं, हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हर एक काम के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड बहुत सारा मतलब नॉलेज ट्रांसफर सेशंस हर जगह मिल रहे हैं. अगर जैसे कि मैंने उस बंदे के बारे में बताया, वो चाहता तो फिर एग्रीकल्चर में बीएससी कर सकता था, प्लांट कार्विंग सीख सकता था. प्लांट कार्विंग इज nowadays it's a wonderful field to explore, because I have seen people, जितने बड़े बड़े 5-star and 7-star प्रॉपर्टीज है हर जगह, let it be a hospital or a corporate office or wherever, carved plants are in need and they sell carved plants in thousands of rupees, राइट. अगर वो ये सीखा होता इंजीनियरिंग के बजाय तो क्या ही अच्छा होता. तो इसीलिए जब भी कोई ये एक्सप्रेस करे कि हमको ये काम करना है, तो दिस इज हाई टाइम दैट उसको भी उस बॉक्स से निकालना है और हमको भी अपने दिमाग को बॉक्स में से बाहर निकालना है. एंड वी शोल्डर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड दैट स्टूडेंट टू whatever he wants to do. We need to understand, we need to first condition our brains, sir. मुझे तो यही लगता है. Okay, fine. Thank you, ma'am. Yeah, definitely, because it's a much debated topic in this world. How can you identify your core competencies when you are not given that opportunity to identify it? Right. So, thank you, ma'am. And if Dr. Krupasindhu sir is actually listening to me and he is present, then I would like to put him the second question. I think he's disconnected.
So, Sir, I just want to, if with your permission, Abhishek, sir, yeah, I just want to add one thing. जैसे आपने बताया, it's a debatable topic. How to know the core competencies. There are counselors around, and हम खुद भी बहुत अच्छे counselors हैं, sir. Only the thing is, as I told you, कि counselors के पास लेके जाना या उन बच्चों की counseling करवाना and उसके माध्यम से उनके core competencies निकालना with मतलब लगातार कुछ sessions एंड मतलब हो सकता है 10 सेशंस लगे, 11 सेशंस लगे, 12 सेशंस लगे, कभी कभी बच्चे का कोर कॉम्पिटेंसी एक सेशन में समझ में आ जाता है, किसी किसी को 2 या 3 सेशंस लगते हैं. सो वी नीड टू हैव द पेशेंस एंड अंडरस्टैंड, और बच्चे से लगातार बात करते हुए उनके लिए देयर आर टेक्निक्स टू काउंसिल देम एंड टेक आउट दोज कोर कॉम्पिटेंसीज, एंड ये हम कर सकते हैं डेफिनेटली, एंड करने No, I agree. Fine, ma'am. I agree. I mean, because I have read a lot. So what, I mean, taking it a little further, right? So at what age should these kids, or I mean, the students be going for this counseling sessions to understand what their core competencies would be? देखिए, 2 तरीके से हम समझ सकते हैं. अगर छोटे बच्चों को, जैसे कि क्लास 3, 4, 5 बिफोर, मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अगर कोर कॉम्पिटेंसीज निकालनी है ना, दैट इज द एक्चुअली राइट एज जहां से हम निकाल ले, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से उनका फाउंडेशन जो है ना बहुत सही बैठता है. जब हम +2 लेवल में आने के बाद उनके कोर कॉम्पिटेंसीज को निकालने की कोशिश करते हैं, उनकी काउंसलिंग करवाते हैं, तो होता ये है कि तब तक वो एक लाइन में जा चुकने के बाद उनका जब लाइन हम चेंज करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत डेफिनेटली आती है. सो आइडियल एज इज बिफोर, मतलब लाइक प्राइमरी स्कूल क्लास 5 तक, या बहुत हुआ तो बिफोर 10th, नॉट बियॉन्ड दैट, बिफोर 10th, क्योंकि 10th में आते आते बच्चों को ये समझ आ जानी चाहिए या समझ ये दे दी जानी चाहिए कि एक्चुअली वो क्या काम करने में सही है और क्या काम वो अच्छे से कर सकता है. उसके बाद जो है उसके लिए भी वीनिंग विल बी डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि एक बार माइंडसेट होने के बाद फिर वहां से निकालकर किसी दूसरे में डालना वुड बी डिफिकल्ट. तो 10th के पहले एंड आइडियली 5th के पहले हो जाना चाहिए. Okay, thank you, ma'am. That would be actually a very important thing for all the parents and even the kids also and other students. Now I think Dr. Krupasindhu Pradhan sir has joined. So, sir, are you able to hear me? Are you there? Okay, so maybe he had joined, but unfortunately, I think he's got disconnected or not able to hear me. So we would like to have this session open for the audience. Anybody want to ask anything? It's very relevant what both the speakers have said about skills, and skills should be something which is transferable, and more important so because the world is changing very fast. So we hear the term VUCA, right? So it's changing, and you need to have skills which can be transferred from one set of industry, one set of job to other. Right. So it's earnest request to the audience. It's meant for you. So please go ahead and ask certain questions. Any doubts, any queries you would have? Madam, I have a question to you. Yes, ma'am. I should compliment you for such a wonderful speech. Thank you. And such a motivational speech, and really you guided the students. And Krupasindhu sir has given a lot of information. It was a lot more informative, whereas the way you address the students, it is really, really motivational. But my question is to you. My students are doing MBA. They are doing management PGDM program. I have 2 sets of questions for the 2 batch of students. The final year students, some of them have already joined, and some of them they are waiting for the recruitment to take place. And how today's discussion, what will be your advice for this final year students? And one more year is ahead for my first year students. What is your views and what is your guidance for my first year students? Madam, please. Thank you. Thank you, ma'am. Because इन बच्चों ने ऑलरेडी मैनेजमेंट चूज किया है,
तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो उन्होंने चूज किया है वो कोई कमतर नहीं है, अर्थात वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स या एक बहुत ही ऐसे कोर्स में वो गए हैं जो कि आज की मांग है या नीड ऑफ द आवर हम जैसे कह सकते हैं, या अधिकांश बच्चे ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस बात के लिए अपने आप को तैयार करना कि वो जो कुछ भी मिल रहा है उन्हें वो सबसे सही मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो कुछ है वी आर नॉट हैप्पी विद दैट, ये सबसे बड़ी परेशानी होती है कई बार, राइट। अक्सर बच्चों को ये लगता है कि मैं भुवनेश्वर के पर्टिकुलर कॉलेज में ना पढ़ के उस कॉलेज में पढ़ा होता या पढ़ी होती तो बहुत अच्छा होता, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आ जाते, या नहीं तो मुझे ये सब्जेक्ट्स नहीं चाहिए था बट देन इस कॉलेज में यही सब्जेक्ट्स है, यही पेपर्स मुझे पढ़ने पड़ रहे हैं, मुझे तो वो पढ़ना था। ये करने के बजाय मैं जहां तक सोचती हूँ कि जो कुछ उन्होंने पाया है उसको समझना कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उनके पूरे जीवन को बदलकर पॉजिटिवली बदलकर रख सकता है। एंड सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जो कुछ वो सीखना चाहते हैं वो हमेशा सीख सकते हैं। सो वट एवर दे हैव गेन्ड रेस्पेक्ट, एंड उसके बाद जब भी आप प्लेसमेंट में जाते हैं तो आपको ये निर्णय लेना है या इस बात का आपको एक खांचा बनाना है, ये सोच आपको बनानी है कि आप किस तरह की नौकरियां करना चाहते हैं। इट्स नॉट दैट कि जो मिल गया हमने कर लिया और उसके बाद जीवन भर कुंठित होते रहे, कि फ्रस्ट्रेट होते रहे कि ये तो मैंने कभी करना नहीं चाहा और ये मैंने फोर्सफुली कर लिया। एंड इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा बेटा है हु इज 27 years old एंड उसने एमएस किया है कंप्यूटर साइंस में यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन, एंड अभी वो नौकरी कर रहा है। एंड जब पढ़ने की बारी आई तो वो भी मैनेजमेंट में गया, लेकिन उसके बाद स्थितियां ऐसी हो पड़ी कि उसे बाहर जाना पड़ा और बाहर जाके उसको पढ़ना पड़ा। मैं कहना ये चाहती हूँ कि उसने एक बार भी उसने प्लेसमेंट नहीं लिया बिकॉज ही वॉज वेरी क्लियर कि मुझे अभी पढ़ाई करना है और प्लेसमेंट अगर मैं लूंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की एंड देन ही टुक द प्लेसमेंट। तो कई बार हमको ये सोचने की जरूरत है कि मैं चाहती क्या हूं, एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज विद दैट, don't compromise with that. I'm not talking about monetary benefits. Look, मैं नहीं बोल रही हूँ monetary benefits की, क्योंकि पैसा हर फील्ड में है और आप ढेरों कमा सकते हैं, क्योंकि आप सब बहुत यंग हैं और शुरुआत ही कर रहे हैं। आप जिस तरह का काम करना चाहते हैं उसको सबसे पहले पहचानिए। Don't get into a work which will give you lot of money but then not the satisfaction of job, और वो वाला जॉब जो आपके स्किल्स या आपके माइंडसेट को सूट नहीं करता। तो आप अभी भी आपने पढ़ाई जो की द बेस्ट की, तो नौकरियां और आगे का राह आप ऐसा चूज कीजिए जहां पर आप अपना 100% देकर काम कर सकते हैं। पैसों को भूल जाइए, पैसे माय डियर यंग फ्रेंड्स आते रहेंगे और इतने आएंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई परेशानी नहीं। बट देन चूज वाइजली एंड गेट इनटू अ फील्ड विच विल गिव यू चैलेंजेस, जो सीखने पर आपको मजबूर करे, जो आगे बढ़ने पर आपको मजबूर करे, जो आपको हर दिन चैलेंज देते रहे, जो आपको हर दिन क्या कहेंगे एक्साइटमेंट से भर के रखे, जो आपको हर दिन ये बताए कि यस आई वांटेड टू डू दिस जॉब। और पैसे तो अपने आप आपके बैंक के अकाउंट में भरते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच मैडम। नहीं तो आजकल बच्चे सिर्फ पैकेजेस देखते हैं मैम, अनफॉर्चुनेटली दे जस्ट सी द पैकेज एंड गेट इनटू अ जॉब, एंड आफ्टर सम टाइम जब मन भर जाता है तो फिर दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, मुझे ये काम नहीं करना था, एंड अ लॉट मेनी थिंग्स। तो डू व्हाट यू वांट एंड पैसे आते जाएंगे, जस्ट डोंट बॉदर अबाउट दैट। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. More It was, I think, appreciated. really energizing to all the students, and they would have got to understand a lot of things. Unfortunately, we could not take questions, answers from the second panelist, right? And since the time is already running out, we would close this topic, lest anybody from the audience has any questions. Okay, so I think we don't have
already are through with all the questions which audience had, and I think it was a wonderful discussion about things like core competencies and different transferable skills, etc. And we would now move on to closing this session with a vote of thanks. And yes, it has indeed been an insightful session and wonderful to have both of you together to address the students, not only ours, but students from other colleges, your colleges as well. It's been a discussion where I think students would realize that what they have to do going forward, and also continuously learn these skills and do it. Thank you, Dr. Krupasindhu, Pradhan sir, and Dr. Vedula Lakshmi ma'am for your excellent inputs on this topic. I also take this opportunity to thank all our our chairman sir, other members of the management team who have facilitated this seminar. I thank all the participants, last not but the least, for having joined this webinar, and I'm sure there will be a lot of key takeaways from what both the panelists said. And we look forward to your participation again in our upcoming webinars. Thank you very much. Thank you. Thank you all.